ओके सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज समर। और आज हम पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली। सो फर्स्ट टॉपिक फॉर डिस्कसिंग पीवाईक्यूज वी हैव इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो वो वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पार्ट हम कवर करेंगे। सो लेट अस सी हाउ डज इट लुक लाइक। जस्ट गिव मी अ मिनट, एक्चुअली माय पेन इज नॉट वर्किंग। व्हाट हैपेंड विद द पेन? Okay, so just give me a minute. I'll be joining the meeting in a minute. Excuse me, sir. Is there someone? Hello. So I just have to restart my. Hello. Okay, so everyone, is my screen visible? Hello. Hello. So I'll just continue, just leave. Let's see. तो basically हम start करने वाले हैं PYQs. Oh God. Yes. So we are starting with PYQs. And the first thing जो हम topic कवर करने वाले हैं वो quadratic equations. Quadratic equations and inequalities पे करेंगे, right? तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? There are two ways. इसको कैसे कर सकते हैं? That I have solutions of questions and we solve while seeing the solution. और ये मेथड मुझे बहुत ख्याल रखता है, राइट? सो वी विल ट्राई टू अवॉइड दैट। और पहले करते हैं कि अपन क्वेश्चन लिख लेते हैं। लाइक आई जस्ट टेक आउट सम डेटा ऑफ द क्वेश्चन एंड देन सॉल्व इट बाय माई सेल्फ, राइट? एंड आई वुड सजेस्ट द सेम ऑल्सो। आई कैन जस्ट नॉट सिंपली सी द सोल्यूशन एंड गो फॉर इट, राइट? तो आई विल ट्राई टू हाइड द सोल्यूशन टू माई लेवल बेस्ट इफ आई कैन, बट if that does not work out, just bear with. ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो हमें दे रखा है पी आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्यू प्लस एस, और जहाँ पे पी क्यू आर एस रियल नंबर्स है, ठीक है? और हमें शो करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू जीरो हैज रियल रूट। एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन, इन दोनों में से एक का रियल रूट्स होने चाहिए। ओके, सो इसको कैसे प्रोसेस कर सकते हैं? देखो, रियल रूट्स का अपन को पता है। व्हाट इज डी? डी वी हैव टू चेक द डी, राइट? The discriminant that is equals to p square minus 4q, and here is r square minus 4s। और हमें दे रखा है पी आर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ q प्लस s, राइट? तो ये d1 है और ये d2 है। तो d1 प्लस d2 करके देखते हैं कितना होता है। इट इज आर स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ s माइनस 4 टाइम्स ऑफ q।
राइट, दिस इज व्हाट वी हैव हियर। और अब यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं? यहाँ पे हमें पता है क्यू प्लस एस की वैल्यू क्या है, पी प्लस आर स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ क्यू प्लस एस हो जाएगा यहाँ पे पी आर। सो d1 plus d2 becomes r square plus p square minus 2pr, and this becomes r plus p का होल स्क्वायर। दो नंबर्स का सम पॉजिटिव है, लाइक d1 प्लस d2 इज पॉजिटिव। उसका मतलब क्या होता है? इट्स वेरी सिंपल। दो नंबर अगर पॉजिटिव है तो कंपलसरी होगा कि एक नंबर पॉजिटिव होना ही चाहिए, राइट? इट इज अ केस कि एक नंबर पॉजिटिव हो गया तो नॉन नेगेटिव होगा, और इधर केस में क्या होता है? रियल रूट्स होता है। सो वी गेट आवर आंसर, सिंपल लॉजिकल आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। हम्म, चलो लेट्स गो बाय ऑर्डर ओनली, व्हाई जस्ट लेट्स डू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। So I'll just hide it for the time being. Okay. So let's raise the part and start with the next question. ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा ना? इट्स वेरी लॉजिकल बेस्ड। डिस्क्रिमिनेंट्स का ऐड करना था, दोनों डिस्क्रिमिनेंट का सम पॉजिटिव, हमें कंडीशन मिल रही थी, और दो नंबर्स पॉजिटिव, अगर दोनों नंबर्स का सम पॉजिटिव है तो एक नॉन नेगेटिव होना कंपल्सरी है। मतलब दो नंबर का सम नॉन नेगेटिव है तो एक नंबर नॉन नेगेटिव होना उसमें से इज अ कंडीशन, इज अ परमानेंट कंडीशन। उसको हमें निकालना है। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर वन ऑफ द रूट्स इज दिस। तो अगर अल्फा ले लेते हैं अपन 1 + 2 - √5, तो उसको पहले रैशनलाइज, मतलब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में कन्वर्ट करते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा? 2 - √5, 4 - √5, so minus, so it is √5 - 2 is my alpha, राइट? तो बीटा क्या हो जाएगा? -√5 - 2। ये हमने पहले पढ़ा था इक्वेशन के अंदर, राइट? अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारे पास हमारी इक्वेशन मिल जाती है। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? -4। अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया? इसको कर सकते हैं, प्लस का माइनस कॉमन हो जाएगा। लेट मी ईज इट अ बिट। माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 2 + √5 अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया और यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस हो जाएगा। 2 - √5 तो जाएगा 4 - √5 का होल स्क्वायर, तो -1। तो अपना इजीली इक्वेशन क्या बनती है? x² + 4x - 1, राइट? लेट्स चेक इट थ्रू। यस, दिस इज आवर इक्वेशन। काफी आसान था। रैशनल इरैशनल नंबर रूट्स की प्रॉपर्टी लगानी थी कि अगर एक इरैशनल नंबर होता है अपने रूट के अंदर तो उसका ही क्या बोलते हैं, लाइक मिरर, या फिर मिरर इन द रियल नंबर लाइन ही दूसरा रूट होगा, राइट? कॉन्जुगेट बेसिकली। सो अब फोर्थ वाला देखते हैं। आई जस्ट कवर दिस अप, ओके, यूजिंग द रॉन्ग पेन। व्हाट्स दिस? Okay, so let's use the start with the fourth question. I'm just hiding it for time being. And let's erase the solution and start with the fourth question. Okay, so the fourth question says the quadratic equation for the, I'll use Hindi and English both for you guys, but yes. So the quadratic equation x square minus ax plus b is equals to 0, and x square minus bx plus q is equal to 0 have a common root. The second equation has equal roots. Show that, okay, show that b plus q, क्या दिखाना है हमें? b plus q is equals to ab/2। तो हमें दे रखा है सेकंड इक्वेशन के इक्वल रूट से। इक्वल रूट से मतलब d0 है, राइट? तो यहाँ में की क्या हो जाएगा? p² - 4q इज इक्वल टू 0, और p² हो जाएगा 4q के। और हमें दे रखा है एक रूट कॉमन है, तो अल्फा जो होगा वो यही होगा। तो रूट क्या हो जाएगा यहाँ? वहाँ अपन अल्फा भी निकाल सकते हैं। अपन को पता है 2 अल्फा p। अपन अगर ले लिया कि अल्फा इज द रूट ऑफ सेकंड इक्वेशन, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू p, सो अल्फा बिकम्स p/2, राइट? अल्फा बिकम्स p/2। तो एक रूट क्या हो गया? p/2। हमें पता है p/2 प्लस, चलो आई जस्ट राइट इट फॉर यू गाइस, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग इसको धीरे करते हैं। चलो रुको, लेट्स नॉट रश फॉर द सॉल्यूशन। तो रखा है x² माइनस ax प्लस b इज इक्वल टू 0। तो इसका रूट होगा एक अल्फा बीटा,
और एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, इसके दोनों रूट है अल्फा अल्फा। ठीक है, हमें अल्फा टू अल्फा की वैल्यू पता है पी है, तो अल्फा क्या हो जाएगा पी बाई टू, सम ऑफ रूट से निकाला है। और हमें एक चीज और पता है, पी स्क्वायर क्या है, फोर क्यू के इक्वल, डिस्क्रिमिनेंट जीरो के क्योंकि इक्वल रूट्स है। अब मैं यही कंडीशन यहाँ पे लगाता हूँ, तो मुझे पता है पी बाई टू प्लस बीटा इज इक्वल टू ए। और हमें क्या दिखाना है, पी और ए पी बी क्यू में रिलेशन दिखाना है। तो हमें पता है पी बाई टू प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा। ओके, एंड उसके अलावा हमें बीटा की वैल्यू पता है, सॉरी दिस इज ए नॉट अल्फा, दिस इज वेयर द कंफ्यूजन गोस। हाँ, so just use, let me use a different pen and this, and I also know that p by 2 into beta is my b। तो मैं बीटा की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, टू बी बाय टी, राइट, टू बी बाय पी। तो उसको यहाँ पुट करते हैं, लेट मी इरेज दिस, जो कंडीशन डिराइव करनी है। तो p बाय टू प्लस b बाय व्हाट वाज बीटा इक्वल्स टू टू बी बाय पी, टू बी बाय पी ए। तो हमें यहाँ पे क्या मिसिंग है हमारे कंडीशन में, क्यू मिसिंग है हमारे पास, ए बी पी आ गए, सब आ गए, एक क्यू मिसिंग है। तो क्यू की वैल्यू क्या है, देखते हैं, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू, सो पी स्क्वायर बाय फोर इज इक्वल्स टू क्यू, या अल्फा स्क्वायर बाय क्यू ही रख लेते हैं अपन यहाँ पे। तो देखो उसको सॉल्व करते हैं, this equation go. Let me erase and empty my board. Let's go. So we are left with p square by 2. So we are left with p square plus 4b by 2b is equals to a. And I know that p square is equals to 4 times of q, right? So 4q plus 4b is equals to 2ap. So 2q plus 2b is equals to ap. We got our answer. बहुत इजी क्वेश्चन था, सिंपल सॉल्व करके अपन को निकालना था, वेरिएबल्स इधर उधर पुट करने थे। ये बहुत इजी कंडीशन है। मैं टेल यू उसको रूट्स तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिखा था ना, कि फर्स्ट इक्वेशन के रूट अल्फा अल्फा है, सॉरी सेकंड इक्वेशन के रूट अल्फा अल्फा है, फर्स्ट इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा। अगर आप उस फॉर्मेट में लिख लेते हो ना, देन इट मेक्स वेरी इजियर फॉर यू टू सॉल्व, राइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ अच्छा मिले। लेट्स गो फॉर द सिक्स्थ क्वेश्चन, आई एम फाइंडिंग इट नाइस, सीम्स इंटरेस्टिंग। लेट मी हाइड द सॉल्यूशन। ओके, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, let's देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी सी एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इज इक्वल टू जीरो हैव अ नॉन जीरो कॉमन रूट। ओके, एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, then show that the other roots of the equation, show that the other roots of the equation this. Okay, तो क्या दे रखा है, लिखता है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी सी इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इज इक्वल टू जीरो। इसके इसके रूट है अल्फा बीटा, और इसके रूट है अल्फा गामा। ठीक है, तो अब देखो, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस ए, अल्फा प्लस गामा इज माइनस बी, अल्फा बीटा इज बी सी, अल्फा गामा इज सी ए। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अदर रूट्स निकालना है। तो अल्फा को रिमूव करना है, राइट, इक्वेशन में से। तो अल्फा को कैसे रिमूव कर सकते हैं, देखते हैं। सो व्हाट आई नीड टू प्रूव इज कि एक्स, मुझे ये निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ बीटा प्लस गामा इन इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा दिस, अल्फा सॉरी बीटा गामा, दिस हैव टू कैलकुलेट। सो लेट्स सी हाउ कैन वी डू दैट। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं,
Let me just go through the solution, guys, for this. I think I'm lacking the trigger point here. So yeah, तो we had also done this. We had done this as well. Then what did they do? They took a sum of it, okay, and then they multiplied both of these. I'm not getting it. अगर sum भी कर देता हूँ मिलता है 2 अल्फा. अगर हम sum करते तो हमें क्या मिलता है 2 अल्फा. प्रोडक्ट करने पर. And how is that though? देखो ये AM ले सकते हैं इसको मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं बट देन टू डज नॉट मेक एनी सेंस. Yeah, I am not getting it. What am I missing here? तो इसको I'll skip this for the time being. आगे करते हैं इसको. But I'm still not getting it. So इसको भी skip करते हैं. We'll move on to the next question. I'll highlight it. This part to do, right? So I'll do it later on, like in the upcoming classes, or like I'll look it up. और देखते हैं questions कुछ. Like which property am I missing? I'm missing a property which I'm not aware. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका सॉल्यूशन छुपा देते हैं. हमें दे रखा है सॉल्व फॉर एक्स व्हेन. क्या दे रखा है लॉग. इसमें अगर आपको लॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न. सो आई राइट. चलो लेट अस राइट लॉग ओनली. सो लॉग 10 रूट ऑफ log 10x is equals to log base of x square x for x is greater than equals to 1. So log of 10x तो अगर मेरे पास हाफ की पावर तो ये यहाँ पे जाएगा. log of 10x log of 10x का ये सबको पता है प्रॉपर्टीज कैसे इस्तेमाल की है. मैंने पता होना चाहिए. वेरी बेसिक. अब ये हाफ है तो मैं वहां कर देता हूँ. या तो हाँ इसको वहां कर देते हैं तो अपने पास क्या बच जाएगा. log of 10x is equals to log 2 times of log 10x and 2 will go here. So अपने पास बचता है. मतलब समझ आ रहा है ना मैं यहाँ पे हाफ जो उधर भेज रहा हूँ. तो अगर मैं लिखूंगा टू लॉग एक्स विद बेस ऑफ 10 तो वो 2x की पावर में चले जाता है राइट. सो log 10 of x is equals to log 10 x square and log 10 x square. So this gives me 1. तो मुझे यहाँ पे मिल जाता है log of 10x is equals to 10 राइट. 10 की पावर 1 हो जाएगा. And then x would be 10 to the power 10, that is a different number, or like a very big number. देखते हैं इसका solution क्या है. Yes, 10 to the power 10. Simple application of log, nothing out of the box. Next. Right? This is what we get. इनका solution देख लेते हैं. It is a very similar solution. They have tried to use different variables also. But I don't think that's necessary. इसको बिना उसके भी कर सकते हैं. ये question कर सकते हैं. This question is nice. Question number 9. Let's see. Let's first erase this part and move to the next question. We're doing the ninth question, right? So I'll just hide the solution. What I have here is roots of x plus p and plus 1 by x plus q is equals to 1 by r are equal in magnitude but opposite in sign. So that p plus q is equals to 2r and the product of root is this. Okay.
तो अगर हम इसको सॉल्व करें पहले इक्वेशन को, x प्लस क्यू प्लस एक्स प्लस पी इज, let me just erase and write that again. X plus q plus x plus p times of r is equals to x square plus, right? And if I write it in a more elaborate form, what am I left with? X square plus p plus q minus 2 times of rx plus pq minus rq minus rp is equals to 0. And it is known to us कि इसके दो रूट्स, एक अल्फा और एक माइनस अल्फा, सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव इज sum of roots is 0, so that is equals to p plus q is equals to 2r, and product of roots is minus of alpha square. So minus of alpha square, एक एक तो कंडीशन अपन निकाली ना कि this first condition is known, and the product of roots is this. तो इस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है अपना, r times of p plus q minus pq. Let's cancel the minus sign because I've already taken the minus sign in common. और हमें होता है p plus q 2r होता है, तो यहाँ पर जाएगा 2r square minus pq, right? This is what is known to us right now. इसको और कैसे कर सकते हैं change? Let me see. Take, oh, okay, I've taken the minus sign already out. It is in terms of p plus q, so I have to eliminate r, right? So I'll simply write r's value here rather than writing p plus q. So r की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे. r की वैल्यू p plus q by 2 into p plus q minus pq. So it gives me p square plus q square plus 2pq minus 2pq by 2. So this gets cancelled and I get the value. Very direct solution, nothing out of the box, बस simply solve करना था इसको. So erase up करते हैं. Let's go to the next question. पहले solution hide कर देते हैं, उसके बाद करते हैं नेक्स्ट, पढ़ते हैं नेक्स्ट सोल्यूशन को. सो अगर क्वेश्चन नंबर 10 देखें, हम हमें दे रखा है that alpha and beta are roots of x square plus px plus q is equal to 0. फिर हमें प्रूव करना है alpha by beta is the root of q x square plus 2q. Oh, I'm missing a sign here. So now this should work. Okay. तो अब देखते हैं हमें क्या पता है. अल्फा प्लस बीटा है माइनस पी, अल्फा बीटा है क्यू. ठीक. तो हमें प्रूव करना है अल्फा बाय बीटा इज अ रूट ऑफ दिस. तो अगर मैं यहाँ पे अल्फा बाय बीटा की वैल्यू पुट कर दूं तो, चलो एक बार इसको एक इजी वे से, मतलब एक नॉन ट्रेडिशनल वे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे क्यू की जगह पे अल्फा बीटा लिख देता हूँ, और एक्स स्क्वायर की जगह अल्फा, तो पहले एक्स की जगह अल्फा प्लस बीटा अल्फा बाय बीटा रखते हैं. और यहाँ पे जीरो होना चाहिए अल्फा बाय बीटा डालने पर, राइट? अगर रूट है तो. और अब क्यू और पी की जगह पे भी अल्फा बीटा डाल देते हैं, जो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन से निकाला है. ये पुराने क्वेश्चन का erase करते हैं पहले. यस, अरे. सो लेट अस मूव थ्रू. अब यहाँ पे मेरे पास है अल्फा बीटा इंटू अल्फा बाय बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा इंटू अल्फा बाय बीटा प्लस अल्फा बीटा शुड बी इक्वल टू 0. तो लेट अस चेक हाउ डज इट कम थ्रू. अब मेरे पास क्या बचता है यहाँ पे, अल्फा क्यूब बाय बीटा
यहाँ पे क्या बचता है? माइनस अल्फा, यहाँ प्लस कर देते हैं और यहाँ पे ऐसा कर देते हैं, टू जस्ट बी अवेयर ऑफ द साइंस, अल्फा बाय बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर बाय बीटा। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचता है? अल्फा, अल्फा क्यूब माइनस अल्फा क्यूब माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर बाय बीटा। तो दिस गोज टू जीरो ऑटोमेटिकली। तो उससे हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। एक बार सोल्यूशन देखते हैं, व्हाट इज देयर अप्रोच। ओके, I think yes, they are also proving it by proving that LHS and RHS are equal to zero. So I hope you get it how to solve this type of questions. See, this lecture can be a bit of boring because I have selected some of a very diverse type of questions and some can look similar as well. So let's see, next question करते हैं, अपन को अपना आइडिया मिल जाएगा कैसे करना है। Let's hide the solution first. तो हमें दे रखा है कि find the value of a for which possesses a roots with opposite sign. रूट्स है और अपोजिट साइन है। अब हम मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं बोला था, देखो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है, बट थ्री पॉजिटिव है अपना, तो अपना कैसा बनेगा? अपवर्ड फेसिंग बनेगा। तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? नेगेटिव होगा, सम ऑफ रूट्स कुछ भी हो सकता है। तो अपन फर्स्ट कंडीशन क्या लगाएंगे? अगर अपन को पता है साइन अपोजिट है तो प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव होगा, यानी कि लेट मी रीड इट, ए स्क्वायर माइनस थ्री प्लस टू बाई थ्री शुड बी नेगेटिव। So 3 goes there, does not matter to be negative. मतलब 1 comma 2, so A should belong to 1 comma 2 open because negative होना चाहिए, राइट? एक उन्होंने बोला अपोजिट साइन के होनी चाहिए रूट। तो देखते हैं आंसर क्या है इसका। यस, अपोजिट साइन के होनी चाहिए, जीरो नहीं हो सकता ना, इसलिए। हम नेक्स्ट में जाते हैं। सॉरी, रॉन्ग पेन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमें दिया गया है इफ एक्स इज रियल फाइंड द रेंज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब भी किसी की रेंज निकालनी होती है, हम कैसे करते हैं? लाइक फर्स्ट इज, देखते हैं पहले कॉमन रूट है कि नहीं है। देख देखते हैं पहले इंडिविजुअल दोनों एक्सप्रेशन की रेंज देखते हैं अपन क्या है, फर्स्ट का देखते हैं। सो फर्स्ट अपन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9। सो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि 14 का स्क्वायर इज 196 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 36, दैट इज 160 बच रहा है। सो ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, बट पॉजिटिव नंबर है, तो दो पॉजिटिव रूट्स है इसके, ठीक है। मतलब कभी ना कभी तो नेगेटिव होगा, राइट? अगर इसका मैं ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूं, देखो कैसा बनता है इसका ग्राफ। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज पॉजिटिव, राइट? सी देखो, इसमें हमें पता लगता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पॉजिटिव है और सम नेगेटिव है, तो यानी कि दोनों रूट्स नेगेटिव है, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा इसका, ठीक ऐसा। हमें नीचे वाला पार्ट देखता हूँ। तो नीचे वाले पार्ट में 4 - 12, तो ये नेगेटिव है, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव है नीचे वाला पार्ट। तो नीचे जो डिनोमिनेटर है, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हम उसको एक स्क्वायर की तरह काउंट कर सकते हैं, तो वो रेंज में ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। इट्स अ पॉजिटिव नंबर, इट्स एन ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। तो अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे रेंज को? ओके, लेट मी जस्ट सी वंस व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। अच्छा, they have taken y की range. Okay, okay. See, this is, oh yes, this is, this was taught to us in our JEE and I really have forgotten this. It's a very nice method of finding out range. Yes. अभी हमें यहाँ पे पता है x रियल है, तो हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या कर देंगे?
ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर देंगे क्योंकि पता है कि एक्स तो रियल है, राइट। इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, बहुत आसान सा मेथड है और आराम से इसको फॉलो कर सकते हो आप। सो आई वुड सजेस्ट यू टू रिमेंबर दिस एंड वर्क ऑन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the value of x if. So we are doing which question number, example number two. So let me hide it. Okay. तो देखो मॉड्यूलस, ये जो मॉड्यूलस वाला होता है ना कि मॉड्यूलस दे रखे हैं, मॉड्यूलस के मार्क्स दे रखे हैं, तो देर इज अ बेस्ट वे टू सॉल्व दिस। देखो हमें पता है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x+3 × x+1, और ये -3 - 1। तो देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसका ग्राफ कैसा बनेगा देखो। मॉड्यूलस का ग्राफ कैसा होता है, -3 - 1, तो ये कुछ ऐसा ऐसा बनेगा ना ग्राफ। तो हम बनाएंगे भी ऐसे ही, देखो लिखेंगे भी ऐसे ही। तो उसको कैसे लिख सकते हैं देख, 2x+5 +x² + 4x+3 = 0 for all x belonging to -∞ to -3। ओपन क्लोज को फर्क नहीं पड़ता उसमें, माइनस और फिर यहाँ पे -1 से लेकर इंफिनिटी। ठीक है, या तो 2x+5 -x² - 4x - 3 = 0 when x belongs to -3 से लेकर -1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे पास बच रहा है x² + 6x + 8 = 0। तो हो जाएगा x+4, सॉरी लेट मी रेज इट। ये हो जाएगा x+4 × x+2 = 0 and x becomes -4 and -2। सो -2 तो है ही नहीं अपने रेंज के अंदर, राइट, मतलब डोमेन के अंदर, तो ये तो हो नहीं सकता। तो x = -4 इज अ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, -x² - 2x + 2 = 0, राइट। सो x² - 4x, तो ये तो इसके कोई रूट्स है ही नहीं कि है, इसके रूट्स हैं x² + 2x - 2 सो इसके रूट्स क्या होते हैं एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। x becomes -2 ± 4 + 8/2, so it is -2 times plus minus, this is 12, right? So 4 into 3, so 2√3/2, so it is -1 ± √3। तो देखो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये तो माइनस, ये आ रहा है, या तो 0.732 आ रहा है। दो वैल्यूज आ रही है, ब्रेन चेक करते हैं, ये वाली रेंज के अंदर है। तो दो वैल्यूज हो जाएंगी, दो सॉल्यूशन होंगे इसके। कहाँ आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। एक तो ये वाली हो गई नेगेटिव वाली, और एक ये वाली हो गई। ठीक है, समझ आए, मतलब मॉडल का क्वेश्चन सॉल्व करना वेरी आसान, बहुत आसान होता है। एक बार आप उसको अपने डोमेन्स के हिसाब से डिफाइन कर दो तो, बिफोर सॉल्विंग क्वेश्चन डोमेन्स के हिसाब से डिफाइन कर दो आप, बहुत इजी हो जाएगा सॉल्व करना। नाउ मूविंग ऑन। वी वर ऑन द, sorry, we had done the second now. So now we are solving this part of the question. I'm not doing another modulus question, we leave it for later on. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। let me have the solution। okay, अरे, so what the question is trying to say, for what values of a are the roots of the equation real and less than 1? okay, देखो रियल है और लेस,
ओके, सो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं रियल की। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। देखो, 9a² माइनस 4 टाइम्स ऑफ a+1 दिस, ठीक है, और लेस देन वन होना चाहिए। तो सम भी क्या होगा? लेस देन टू होगा। सो 3a दिस टू बी लेस देन टू। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं पहले। सो 9a² माइनस 16a² माइनस 16 है, तो भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यानी कि क्या होगा? दिस इज अ प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन, राइट? नो। So how do we move forward with this? 16 minus 9 is 7. So minus 7a² minus 16a should be greater than equal to 0. This means uh, less than equal to 0. This means less than equal to 0. This means minus 16 by 7, 0. So a becomes minus 16 by 7, close bracket, 0, close bracket. And now this condition should also suffice. मतलब क्या होगा यहाँ पे? 3a, why am I not able to write? So 3a minus 2a minus, ऐसा कर दिया हमने, -2 को यहाँ लिया है। नाउ माइनस a माइनस 2a+1 लेस देन 0, a+1 ग्रेटर देन 0, मतलब -2 - 1। तो ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी ओपन यूनियन। सो दो आ गई अपने पास रेंजेस, अब इन दोनों को प्लॉट करते हैं। This is greater than -2, right? So minus 16 by 7, -2, -1, and a 0 also. तो ये था हमारे पास क्लोज्ड के अंदर, और ये था हमारा ओपन के अंदर। तो दिस इज द कॉमन पार्ट, राइट? तो बन जाता है -16/7 क्लोज टू ओपन यूनियन 0 पे क्लोज दिस। आई होप आई एम मेकिंग सेंस गाइस। मैं सॉल्व बोल के नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज आई डोंट हैव अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग, but I'm trying my level best, right? So please bear with me. Okay, so we have a wrong solution, guys. Why there's a two missing here? I'm still not getting it. अच्छा, ये एक सेकंड कंडीशन, अच्छा। No, but I'm still not getting it. Why a+1 is also being added here? I'm still not getting why they've taken this. I know what they're trying to do here is the leading quotient multiplied by that.
ओके, फर्स्ट केस लेके देखते हैं कि अगर नेगेटिव होगा। ये वन है, तो ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है ना, या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा। इस केस में क्या लीडिंग कोएफिशिएंट इज लेस देन जीरो, नहीं पॉजिटिव। ए पॉजिटिव होना चाहिए, ए प्लस वन पॉजिटिव है, और एफ ऑफ वन भी पॉजिटिव है। ओके, सो ठीक है, इन दोनों केस में एफ ऑफ वन पॉजिटिव है, इन दोनों केस में एफ ऑफ वन नेगेटिव है। हाँ तो ठीक है, दिस ऑल्सो सफाइसेस। ओके, दिस इज अ बेटर इक्वेशन गाइस। ओके, okay, I'll suggest this is the better condition. My condition was also not that bad. That was also correct, but this is more efficient. Okay, इसमें क्या किया देखो, एफ ऑफ वन की वैल्यू और ए की वैल्यू सेम होगी। अगर ए अपना नेगेटिव है तो एफ ऑफ वन वुड बी नेगेटिव, और अगर एफ ऑफ वन पॉजिटिव है तो ए प्लस वन हैज टू बी पॉजिटिव। सो देर इज नॉट मच ऑफ चेंज, अपना सेम आ रहा था आंसर, बट आई हैड टेकन व्हाट। ओके, सो टू एंड माइनस वन आ रहे थे मेरे, बट इट शुड बी माइनस वन एंड नो, बट दे हैव मेड द सॉल्यूशन हियर आल्सो देन। क्योंकि माइनस टू वन, अगर आई हैव टेक minus 2 value here. So what does minus 2 give me? Okay, yes. So ठीक है. You're brushing up some concepts. This is also important to remember this last point. Okay, next question देखते हैं. Next question क्या है? I think we'll take up this as the last question and then stop it, because we have to wrap it up for the upcoming classes as well, right? So let's do, which question do you want me to do? Let's solve this one. This problem maybe looks fine. This, yeah, let's do this. Okay. So I have already seen the solution, guys. My bad. I had just gone to the solution while coming to. तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है. I'll read it through for you guys अगर ऐसा है तो. कि इसमें क्या किया गया ना, the question itself is giving you hints. So what are you supposed to do here is कि जहाँ पे ये दे रखा है कि 2x² minus 3x plus 1 into 2x² plus 5x plus 1 is equals to 9x². You simply divide the whole equation by x. You get this kind of equation. And then you solve it by taking 2x plus 1 by x as y. You solve the y, put the value of y as 2x plus 1 by x, and then solve for x. Very easy to solve. It's nothing out of the box. This is also very easy. Let's solve this one. I have a very nice solution for this. तो पता है अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी, अल्फा बीटा है सी. लेट मी erase the other part because it's annoying. तो हमें निकालना है ये. तो दो रूट्स क्या है, दो रूट्स क्या है, ये तो सम ऑफ रूट्स क्या बन जाएगा अपना, अल्फा स्क्वायर. तो हमें निकालना है ये. Okay, let me erase the whole thing up and this. Okay, so again, this we have to solve knowing that alpha plus beta is minus b and alpha beta is c. तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखो, हमें पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा इज बी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ सी इज बी स्क्वायर. So alpha square plus beta square becomes b square minus 2c. This we know. अरे, दिस वी नो. अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखो कैसा बनता है ये. अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज बी स्क्वायर माइनस 2c अपॉन. अच्छा लेट्स प्ले, पहले अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर में कर लेते हैं सब.
देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या लिखा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इज बी स्क्वायर माइनस फोर सी प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर सी अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दैट इज सी स्क्वायर एक्स प्लस बीटा स्क्वायर माइनस फोर सी, इट्स फोर सी राइट, टू सी not फोर सी, why am I writing four टू सी, फोर सी sorry, it is टू सी, so it is two टू सी into b square minus टू सी upon c square. This is my equation, so let's solve it up. I am left with x square minus b square c square minus b 2c cube plus b square minus 2c by c square into x plus, sorry, plus b, let me erase it. This is the equation. So let us see the answer. What? Acha, here is the solution, sorry. Okay, this is the solution we get. Very simple. They have just done what we did. In a different way though. कोई दूसरा क्वेश्चन करने का आपका मन हो तो अपन कर सकते हैं, ये क्वेश्चन करना हो, ये तो आता है वेरी इजी। फोर एक्स, तो भी हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, ये हमेशा पॉजिटिव है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर वन से लेकर थ्री से इन्फिनिटी, I'll write it down. ओके, वाज देयर इक्वालिटी देयर, तो इक्वालिटी यहाँ पे भी रहेगी। हाँ, ये हमारा सोल्यूशन, इक्वालिटी लगा देते हैं। ठीक है, ये तो सोल्यूशन चेक करें। Which part has the solution? I don't know. I don't know where the solution is, but it is the right solution, guys. You have to believe me here. There is no other option for you. Okay, so let me check the time. Okay, so we are almost done with the lecture, and I'll close the PYQs here. So I hope you understood the questions that we did today, some of the new concepts of solving the question जो हम पहले क्लास में कवर नहीं कर पाए होंगे कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नई टेक्निक, जैसे कि दिस वाज वेरी यूनिक, दिस वाज यूनिक, दिस प्रॉपर्टीज वर यूनिक। तो ओके, आई जस्ट एंड द सेशन हियर। थैंक यू गाइस, बाय।